हेलो एवरीवन, मैं हूं ज़ेबा खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में। आज बैटल ऑफ द पैंस 2025 का डे 10 है और मैं आ गई हूं सर सैयद पब्लिक स्कूल में। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर और मिलते हैं यहाँ के फ्यूचर शेफ से। तो ये रहा स्कूल के अंदर का एक छोटा सा टूर, जिसे आप लोग देख लें और फिर उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी उस हॉल में जहां पर ये कुकिंग कॉन्टेस्ट होना है। तो चलिए चलते हैं हॉल में। Good morning, everyone. On behalf of Sir Syed Public School Unnao, I am extremely delighted and thrilled to welcome Go Abroad Training Institute Private Limited. I welcome everyone here to the exciting culinary competition, the Battle of Pans 2025. We are truly honored to have with us today Mr. Mohammad Haris Riaz, the Managing Director of the Institute, a visionary leader whose guidance continues to inspire young minds to explore their passion for culinary arts and global learning. I request our respected principal ma'am to kindly give a warm welcome by presenting a bouquet. I also extend a warm welcome to Mrs. Zeba Khan, the director, whose constant encouragement and leadership have helped shape many young talents. I give you a warm welcome. I'll request our Vice Principal ma'am to kindly come up and honor her with a bouquet. I will never forget a warm welcome for Mr. Sam, the business coordinator here, and I request Principal Ma'am once again to kindly honor him with a bouquet. I'll not keep here any longer. We look forward to a day filled with flavor, fun, and fantastic talent. Over to you, Sam. Good morning, everybody. Good morning, everybody. I know it's about to become an afternoon, right? Noon, then eventually afternoon. But anyway, I can see your popping enthusiasm. Right. Welcome to the most rocking, welcome to the most rolling event of the day, Battle of the Bands 2025 Intra-School Cooking Contest. Welcome, everyone. Now, before we meet our young chefs, let me introduce everybody to the judges. But before the judges, please welcome the principal, the respected principal of Sir Syed Public School, Mrs. Sadia Kamal. Welcome. Now to the judges, please welcome Mrs. Zulfia. Now please welcome Mrs. Afreen. And now, please welcome Mrs. Zeba Khan, who is the director of Go Abroad Training Institute Private Limited and the force behind the YouTube channel Zeba Khan Working Women's Kitchen. Welcome, everyone. Now, we have met the judges. It's time to meet the young chefs. Your name? Welcome. You can just speak out. Afifa Naseem. Welcome.
Just speak it with. Suhani Gupta. Welcome. Good morning, sir. My name is Aram Kitwai. Welcome. Fantastic. Myself, Gracie Bharti. Hello everyone, my name is Samiksha Pandey. Welcome. My name is Ariba Khalid. No, it wasn't audible. Can you speak once again? Ariba Khalid. Welcome. Myself Shreya Verma. Welcome. Good morning everyone, myself Tanu Singh. Well, Myself Vasundhara. welcome. Welcome. Welcome, youngsters. Welcome, everyone. I would request respected principal and the judges to officially give out a signal for you to begin cooking. Let the battle begin. सिग्नल मिलते ही सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। सभी बच्चे अपनी अपनी रेसिपी को तैयार करने में बिजी हैं। तो देखिए, कहीं पर चॉपिंग हो रही है, तो कहीं पर ब्रेड के ऊपर सॉसेस लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर देखिए अनियन चॉप हो रही है, कहीं पर कुछ वेजिटेबल्स और हैं वो हो रही हैं, कहीं पर फ्रूट्स कटिंग हो रही है। तो सब बच्चे अपनी अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग इन वेजीज़ को, फ्रूट्स को कट करने में बिज़ी हैं। और अभी बच्चों को हम लोग थोड़ी देर काम करने देते हैं, फिर उसके बाद इन शेफ़्स से आकर हम लोग मिलेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी रेसिपी के बारे में जानेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले इनको वर्क करने देते हैं ताकि ये थोड़ी सी अपनी रेसिपी को रेडी कर लें। फिर उसके बाद इनसे हम लोग 1 to 1 इंटरेक्शन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आलू को फ्राई किया जा रहा है। हर बच्चा अपनी रेसिपी को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने हैंड से 100% रेसिपी को दे रहा है ताकि उसका टेस्ट, उसकी प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें बेस्ट हों। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी रेसिपी को काफ़ी हद तक के आगे पहुंचा दिया है। और अब इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में इनके पास पहुंचेंगे और इनकी रेसिपीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल मैम के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुए और फिर उसके बाद हम लोगों ने 1 by 1 सभी काउंटर पर जाकर सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया और उनकी रेसिपी के बारे में जाना। तो आइए चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। Hello. Hello ma'am. What's your name? Myself Hifsa Harun. Hifsa Harun. What are you preparing? I'm making cream for fruit cream. My name is Vasundhara. Okay. And what is your recipe name? It's my personal recipe. I make it my Okay. own. How many types of recipes you are presenting? Ma'am, 4 types. What's your name? Afifa Naseem. Afifa Naseem. And what are you preparing? Good. Actually, together these Which one? numbers. Okay. Good. Keep it up. And what's your name? My name is Sani Gupta. Soni Gupta. Suhani. Suhani Gupta. Okay. And what is your recipe name? I'm making a fresh bliss bowl of yogurt curd mixed with fruits. Yogurt curd. Oh, sorry, hung curd. Hung curd. I'm Hung so curd. sorry. Okay, no, it's okay. Hung curd with hung curd. Okay. And you are making bread pizza. So what are you preparing? It's Nectar's Bloom. Okay. It's like I've made it inspired from Inspired New from? Zealand dish pavlova. Okay. This is sheer kurma and this is Oh. So how did you choose this recipe? because this is a sweet dish. Okay. This is spice and healthy and fresh. Okay. So what are the ingredients included in this mixture? Vegetables, Okay. potato, Okay. and sauce, mayonnaise. So you have mashed all the things together. Okay.
Good. So you have added something else with bread? Yes, I added kismis, and then firstly I take a slice of bread and squeeze it in the milk and Okay. make a little ball, Okay. and I fill the kismis within, and that's it. Oh. What are you preparing? I'm preparing samosa and Okay. besan ke laddu and samosa with chutney. Samosa with chutney. Yes. So desi samosa. Yes. You have done something innovative in your recipe. Something innovative, just like I have given the spices taste just like Indian style. Okay. The traditional I'm trying to make this something traditional, which is Okay. attached to Indian roots. Okay. And how you have prepared your laddus? None with besan Okay. and with powdered sugar Okay. and with desi ghee. Desi ghee. Yes, and I will garnish it with the dry fruits. Okay. Why the color of your laddu is not light yellow? Good. Keep it up. और हमारे को जजेस ने भी सभी काउंटर पर जाके स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन किया और फिर उसके बाद एक छोटी सी क्लिप मैंने शेयर कर दी है स्कूल की हॉस्पिटैलिटी की, जो उन लोगों ने हम लोगों को सर्व किया। और फिर अब बारी आ जाती है सैम सर और हारिस सर के सिग्नेचर स्टेप की। तो ये लोग एंजॉय करते हुए अपने सिग्नेचर पोज को देते हुए फिर उसके बाद मैं गई स्टूडेंट्स के पास और उनसे क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट किया, क्योंकि टाइम अब कम बचा था और ऑलमोस्ट सभी की रेसिपी कंप्लीट होने वाली थी। तो उससे पहले मैंने जाकर उनसे क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट करा और अब कुकिंग टाइम हो गया है कंप्लीट। तो सैम सर ने अनाउंस किया, Dear chefs, here I start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up for cooking. You can still be decorating your dishes. Now, the judges will approach your working station and judge accordingly. Is that clear? Thank you for your attention. अब कुकिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद बारी आ जाती है प्रेजेंटेशन की। तो मैं सारे स्टूडेंट्स का 1 बाय 1 आपको प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, ताकि आप इन बच्चों की मेहनत को देख सकें और कितने अच्छे से इन लोगों ने अपनी अपनी रेसिपीज़ को प्रेजेंट किया है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। और फिर प्रेजेंटेशन के बाद अब टेस्टिंग टाइम। तो हम सभी जजेस गए स्टूडेंट्स के काउंटर पर, ताकि वो बच्चों को जो रेसिपी उन्होंने बनाई है उसका ओवरव्यू दे सकें और उनको पॉइंट्स दे सकें कि उन्होंने किस तरह से अपनी रेसिपी को टेस्ट दिया है। उसके हिसाब से हम लोग बच्चों की रेसिपीज़ को जज कर सकें। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत टेस्टी रेसिपी रेडी की थी। Young chefs, just a little longer before we can announce the winners of Battle of the Pans 2025. Now, I would love to express gratitude to the man who made this event a possibility. He is the Managing Director of Go Abroad Training Institute Private Limited, Mr. Haris Riaz. Good afternoon, everyone. I am Haris, the Managing Director of Go Abroad. When I stepped inside this room at the beginning, I told to my team as well as the staff member of Sir Sayyid Public School, and I told them that something great is going to happen, because I have seen that you all have done some extraordinary efforts. All the tables were properly arranged. You were ready with your staffs, and I have seen the level of professionalism that you all were carrying with yourself. And this is the first school where I have tasted almost every recipe. Everything was very well prepared. And one thing I just want to inform you, that this is a competition and winning is not the only concern. It is not the ultimate thing. There would be only one winner. But the most important thing is that you all have participated, and you all have participated in a very well manner. You have given your 100%. You have showcased your culinary skills, and I am
I have no words to say, right? I'm just flat with the dishes that you have prepared, the taste and the aroma. So thank you everyone. And at the end, I would just like to inform one more thing, that you are going to get many things over there, because the delegates from HTMI Switzerland are going to come over there, and the chances to meet Chef Andy. He is the Guinness Book of World Record holder, and he has made the longest cake in the world, 2.5 kilometer long, right over there, you can see in the standee. That is the image of Chef Andy. So at the end, I just want to say to everyone, just give a big round of applause to all our young chefs. Thank you so much. On this note, now the winners of Battle of the Pans 2025 Intra-School Cooking Contest are, on third position, we have Vasundhara. On second position, we have Tanu Singh. Congratulations. Please, another big round of applause. And another one. That's a fair calculation. Okay, now the winner is Arham Kidwai. Congratulations, you have broken your way into glory. A big round of applause for the winner. Yeah, your colleague, right? He's from your school. और फिर इस तरह से एक और कुकिंग कॉन्टेस्ट कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने लास्ट में सभी स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटोशूट किया। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।